Hello everyone, Namaskar, welcome to Supergrad Scat by Top Rankers, and here I am with the supersets of DILR. Yes, and today we will be doing Venn diagrams. और Venn diagrams सुन के बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो आज का सेशन, कल का सेशन, दोनों दिन आज हम Venn diagram के बेसिक्स थोड़े से ब्रश अप करेंगे, जिसमें हम 3 वाला Venn diagram, 4 वाला Venn diagram सॉल्व करेंगे. उसके बियॉन्ड कल की क्लास में वी विल बी डूइंग understanding various tricks to solve maxima and minima in the Venn diagrams. Hi, Sivatamika. Good evening. Welcome to the class. So, आज का, कल का और परसों का ये तीनों सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इन 3 सेशंस में आप वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्रैक करना सीख जाएंगे जो कि कैट में आते हैं और जिनको हम पढ़ के ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो भाषा नहीं समझ में आती, दूसरा हमें तरीके नहीं पता होते, और जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा, उसके लिए भी आई हैव लेजिट इक्वेशन वाला फॉर्मेट, जहां से हम इक्वेशंस फॉर्म करके अपने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है. So let's go ahead with the disclaimer ki why even bother to watch this session. One is the cat is coming. Second is choti choti magar moti baatein. Yes. Hi Tanishka. Good evening. Looking like a gentleman means I was looking like a bawa, right? No, no. Looking like a gentleman. Thank you. So choti choti magar moti baatein in the Venn diagrams which are required, which should be there with you to solve the questions, because they will save 10 plus minutes in the actual examination. And my advice is to skip this video. I would recommend कि भाई छोड़ दो आज की क्लास, कल की परसों की बिल्कुल भी मत अटेंड करो, क्योंकि अगर आप नहीं अटेंड कर रहे तो भाई फिर 20 से 30 घंटे बिताओ, खुद एक्सप्लोर करो. अगर आपके पास इतना टाइम है तो बहुत अच्छी बात है. So here's the question. Would you guys like to try hands on it? So here is your timer. I'm just giving you 2 minutes to try. Just form the diagram, fill the diagram, and try. So Siva is saying, no, still you are not looking like a gentleman. Earlier you were not, and right now also you are not looking like a gentleman. Right? So fine. And in the meantime, just keep on liking, keep on sharing with your friends until it reaches everyone whosoever is preparing for CAT, right? So ये एक डिस्क्लेमर दिमाग में बिठा लो भाई कि आई हैव टू शेयर, आई हैव टू लाइक. जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल ऑफ you, those who are watching this video. Okay, okay. Thank you, Siva. Just try this set. Everyone, and whosoever finishes first will get a chocolate from my side. Is it solvable? Okay, the time is up. Let's look at the question. In a school, the students can choose between hockey, cricket, and badminton. By the name itself, it is clear that it is a set of Venn diagrams. It is a set of, okay, it is a set of Venn diagrams. Now, 60% of these students choose at most one. At most का मतलब क्या होता है? What do they mean when they say at most? तो at most one का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है,
बट स्टिल एटमोस्ट वन का मतलब होता है एग्जैक्टली जीरो प्लस एग्जैक्टली वन। बहुत सारे लोग एटमोस्ट वन में एग्जैक्टली जीरो कंसीडर नहीं करते, पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 30% of the students choose exactly two of these sports. Okay. The number of students who choose all the three sports is 5 by 6 of those who choose none of the given sports. 10% of the students choose both hockey and cricket but not badminton. 40% of the students chose hockey or cricket but not badminton. 44% of the students chose hockey and 12% of the students choose only cricket and badminton. 2400 students choose only hockey and badminton. So this is the information which is given, and by reading the information, by reading it at most, by reading and but not all these things at the same time, it implies that it is a pure set of Venn diagrams. And Venn diagrams, that two of three sets at a time. What all three sets I will draw? This is hockey. This is badminton. This is cricket. This is small a, this is small b, this is small c. This is P, this is Q, this is R, this is O, and this is none. So the first rule, the first thumb rule of solving a Venn diagram is make the diagram and assign small variables to every region, and that to similar variables ताकि हमें याद रहे a plus b plus c मतलब exactly 1, p plus q plus r मतलब exactly 2, o मतलब exactly 3, and n मतलब exactly 0. Got it or not? So first of all, we are assigning the variables to every region without even filling the direct information. And now we will assign the values to the variables. Let's look at it. 60% of these students chose at most one of these sports. 60% chose at most one. So at most one, exactly one. Exactly zero कौन सा होता है? None. Plus at exactly one क्या होता है? A plus B plus C is equal to 60x. Suppose there are total, तो टोटल मैंने कितना अज्यूम किया? U is equal to 100x, तो 60% will be 60x. Got it? 30% of the students choose exactly 2. Exactly 2 क्या होता है? P plus Q plus R is equal to 30x. The number of students who choose all the three sports, that is O, is equal to 5 by 6 of N, who choose none of the given sports. 10% of the students choose both hockey and cricket but not badminton. Hockey and cricket but not badminton. So this is given as 10x. 40% of the students chose hockey or cricket but not badminton. Hockey और का मतलब यहाँ पे और वर्ड का मतलब क्या होता है? और वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनियन, बट उसमें क्या नहीं आना चाहिए? बैडमिंटन। यूनियन कैसे लिखेंगे? A प्लस सी प्लस आर। So hockey union cricket minus badminton will be equal to hockey union cricket will be A plus this will be equal to A plus C plus R. Only hockey plus only cricket plus hockey and cricket is given as how much? 40%. That is 40x. I know the value of R. It means A plus C is equal to 30x. Next, 44% of the students choose hockey. So hockey का total दे रखा है कितना? 44x. Okay. 12% of the students choose only cricket and badminton. This is cricket, this is badminton. Only लगा रखा है मतलब Q की वैल्यू दे रखी है. तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q is given as 12x. 2400 students choose only hockey and badminton. इसकी वैल्यू P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400. Now let's look at it कि R की वैल्यू कितनी है? 10x. तो P plus Q कितना हो जाएगा? So P plus Q will be equal to 20x, क्योंकि R कितना हो जाएगा? 10x. 30 में से 10 गया तो बचा कितना? 20x. यहाँ Q की वैल्यू 12 रख दो तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18x. और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12x.
Now they have given 2400 students chose only hockey and badminton, only hockey and badminton, that is 18x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18x is equal to 2400. So x is equal to, ये 18 से कैंसिल होगा, 18 into 1 बचा कितना 60, 18 into 3 बचा कितना 54, तो 18 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो 18 into अगेन 3 133.33 ऐसा कुछ बनेगा। कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने। लेट मी लुक एट इट अगेन। 2400, तो P plus Q is given as, and Q is 12% of the students choose only cricket and badminton. 12% of the students choose cricket and badminton. Cricket and badminton is 12x. This is 10x. And 2400 students choose only hockey and badminton. Only hockey and badminton, that is 18x. 18 plus 12 is this, P plus Q plus R. Oh, sorry. So this will be 8x. Sorry. तो ये 8x हो जाएगा। अगर ये 8x है, 8 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 into 100, दैट इज 30,000। उसकी अपने को जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई भी दिक्कत? अब अपने को ए बी सी निकालना है। कैसे निकालोगे? यू नो दिस इज 8x, यू नो दिस इज 10x, एंड व्हाट दे हैव गिवन दिस थिंग कि n और o के बीच में रिलेशन दे रखा है और o भी निकाला जा सकता है। o के बारे में क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स a और o, so how we are proceeding, 30% choose exactly 2। तो मेरा p plus q plus r मैंने यूज कर लिया। The number of students who choose all the three is 5/6 times of those who choose none of the sports। अब मैं देखता हूं, this is given as what, 44%, this is given as 12%। b की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर a plus b plus c वहां से नन की वैल्यू आ सकती है क्या? सो लेट्स लुक एट इट। p q r मुझे पता है, o पता है, O is equal to 5/n of this thing, okay। और मुझे a plus c पता है 30x। अगर a plus c 30x है तो n plus b पता चल जाएगा। n plus b कितना हो जाएगा, उससे c आ जाएगा अपना, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो n plus b, अगर a plus c 30x है तो n plus b भी मेरा 30x हो जाएगा। तो n plus b is also 30x। Now n plus b is 30x and this is given as 44। 44 plus 30, 44 plus 30 कितना हो जाएगा 74। 74 plus 12 कितना हो जाएगा 86। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14x। जैसे ही c की वैल्यू 14x आई, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16x। अब मेरे पास a पता है, मुझे p पता है, मुझे r पता है। कैन आई कैलकुलेट o? o जैसे ही निकला तो o और n आ जाएंगे, n आया तो b आ जाएगा। सारी वैल्यूज डिकोड हो सकती हैं। तो ये कितना है 16x plus 8x is 24। 24 plus 10, 24 plus 10 कितना हो जाएगा, 24 plus 10 is 34, total is 44। so this is what 10x। now this is 10x, तो o will, this will be equal to, अगर मैं यहां से o की वैल्यू निकालूं तो 5/6, तो o by n is 5/6, that is 10/12, so this is 12x। अब मेरे पास सिर्फ b बचा है, मैं क्या b निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। this is 44, this is 24, 44 plus 24 is 68, 68 plus 14 will be 82, so b comes out to be 18x। and this is how I can calculate everything because I know the value of x। what is the value of x? 300। so is this done? easy question था, एक के बाद इंफॉर्मेशन यूज करनी है, and you can solve। how many students choose only cricket? Only cricket, only cricket means 14x, 14 into 3, so the answer is 4200। got it? clear है, कोई problem? how many students does not choose any of the sports? how many choose does not? so 12, 12 into 3 36। how many students choose at least two of the three sports? at least two, at least two का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब होता है एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। एग्जैक्टली टू की वैल्यू 30x, एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू 10x, तो 4 into 3 दैट इज 12,000। गॉट इट?
This is homework question. Put it in the comment box. This is homework question. Put it in the comment box because I've solved every bit of it. Next, go through this question and try to make the diagram. Try to fill the diagram. All of you keep on sharing with your friends, everyone. हो रहा है? सॉल्व हो रहा है या मैं करवा दूं? चलिए, और 1 मिनट ले लेते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हो या नहीं. कीजिए ट्राई. 1 more minute to go. Solve this one. Time up. Let's look at this. Answer the questions based on the given information given below. In a group of 280 people in which everyone uses headphones of different brands, Bode, Sony, Jabra, and Crossbeat, 175 use Sony, 155 use Bode, 165 use Jabra, and 150 use Crossbeats. Each person uses headphones of at least one brand. At least one मतलब none की वैल्यू कितनी दे रखी है? जीरो. नन की वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो. The number of people who use headphones of Sony and Jabra is same as those using Crossbeat and Boat headphones, which in turn is same as those using headphones of exactly three brands, which is 75. Also, it is known that the sum of the number of people who use Sony and Jabra only and the number of persons who use Crossbeat and Boat only is 25. The number of people who use headphones of exactly two brands is 100 more than the number of people who use headphones of exactly one brand. ठीक है? कितने लोगों ने ये सेट पहले किया हुआ है? आई वाज जस्ट चेकिंग कि तुम लोगों को पुराना कितना याद होता है. किया हुआ है पहले? तनिष्का? ठीक है. तो अगर 280 लोग हैं तो कैपिटल यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280. लेट्स फॉर्म दी वेन डायग्राम. 1 2 3 4. 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट को थर्ड से ऐड करेंगे, सेकंड को फोर्थ से ऐड करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से ऐड करेंगे, सेकंड को फोर्थ से ऐड करेंगे. दिस इज क्रॉस बीट, दिस इज सोनी, दिस इज जबरा, एंड दिस इज व्हाट इज द लास्ट थिंग? दैट इज बोट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि भाई टोटल 280 है, 175 यूज सोनी, तो सोनी की वैल्यू 175 दे रखी है.
155 यूज बोट, तो बोट की वैल्यू 155 दे रखी है। 165 यूज जबरा, तो इसकी वैल्यू 165 दे रखी है। एंड 150 यूज क्रॉसबीट, तो क्रॉसबीट की वैल्यू 150 दे रखी है। दे यूज headphones of at least one brand. So this is small a, this is small b, this is small c, this is small d, this is p, this is q, this is r, this is s, this is t, and this is u. This is w, this is x, this is y, and this is z, and this is o. Now what they are saying, the number of people who use headphones of Sony and Jabra is same as those using Crossbeat and Boat. Sony and Jabra means W plus T plus O plus Z. W plus T plus O plus Z is given as 75. Same as those using Crossbeat and Boat. Crossbeat and Boat मतलब X plus O plus R plus Y is given as 75, and W plus X plus Y plus Z is given as 75. Any problem? Any problem? Siva, Tanishka, everyone, those who are attending, just give me a thumbs up. Are you guys getting how I have noted the information, how I have decoded the sentences, what they have given? They have not used the word only. अगर only use करते तो हम सिर्फ s की बात करते, अगर सॉरी इसमें t की बात करते, अगर only use करते तो सेकंड वाले केस में सिर्फ r की बात करते, बट only use नहीं किया है, इसलिए पूरा पूरा ओवरलैपिंग हम यूज करने वाले हैं। गॉट इट? क्लियर है? कोई भी दिक्कत इसमें किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। Which is 70. Also, it is known that the sum of the number of people who use Sony and Jabra only, Sony and Jabra only, that is T, and the number of people who use Crossbeat and Boat only, Crossbeat and Boat only, that is R, is given as 25. Okay. The number of people who use headphones of exactly two brands is 100 more than the number of people who use headphones of exactly one brand. तो मुझे exactly 3 पता है, मुझे exactly 2 पता है, मुझे exactly 1 पता है, तो इन सब का सम अगर करूं तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। इन सब का अगर सम करूं तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। तो exactly 1 को हम अगर x ले लें, या exactly 1 को हम कौन सा नंबर ले लें, m ले लेते हैं, तो exactly 2 कितना हो जाएगा, m plus 100। कैन आई राइट दिस कि exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4 is equal to 280। exactly 1 को मैंने m बोला, प्लस exactly 2 को m plus 100 बोला, प्लस exactly 3 को उन्होंने दिया हुआ है 75, और exactly 4 मुझे नहीं पता, राइट? या exactly 4 के बारे में भी कुछ पता है? नहीं पता, तो exactly 4 को हम exactly 4 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम n ले लेते हैं, is given as 280। if I solve this I will get 2m plus n is equal to 105। 100 गया तो बचा 180, 75 गया तो 105। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी? exactly 1 एक बार, exactly 2 दो बार, exactly 3 तीन बार, और exactly 4 चार बार, is given as how much? 150 plus 175, that is 325। 325 plus 165, so that will be 390, 490, 490 plus 5, 490 plus 5 will be 495, plus 100 will be 595, plus 50 will be 645, so this will be given as 645। यहाँ पे exactly 1 को आप m लिखोगे, प्लस ट्वाइस ऑफ m प्लस 100 लिखोगे, प्लस exactly 3 को आप 3 into 75 लिखोगे, प्लस exactly 4 को 4n लिखोगे, इज इक्वल टू 645। इसको सॉल्व करेंगे, m plus 2m will be 3m,
प्लस 4n इज इक्वल टू 645 में से 225 गया तो बचा 420। 420 में से 200 गया तो बचा 220। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट इट एज 8m प्लस 4n इज इक्वल टू 420। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट 5m इज इक्वल टू 200। तो m इज इक्वल टू 40। m इज इक्वल टू 40 मतलब एग्जैक्टली 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो एग्जैक्टली 2 कितना आ जाएगा 140। अगर इस इक्वेशन में इफ आई पुट m एज 40 तो 40 इंटू 2 इज 80। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और आई शुड से एग्जैक्टली 4 कितना आ जाएगा 25। तो सारी वैल्यूज पता चल गई जो जो निकाल सकता था। दिस इज 25, एग्जैक्टली 1 is 40, exactly 2 is 140, exactly 3 तो ये दिया ही हुआ है is 75 and exactly 4 is 25. This is what I have done. Now rest depends upon the questions, the follow-up questions. How many people use headphones of all the four brands? ये तो हम बहुत directly निकाल पाए, that is 25. Exactly 4 is given as 25. Next, how many people use headphones of exactly one of the four brands? Exactly 4, exactly 1 निकाल चुके हैं, which is given as 40. Next, how many people use at least two and at most three of the four brands? This is your homework question. Put it in the comment box. ये comment box पे डालना है. And next question, the last question. If the sum of the number of people who use headphones of Sony Jabra Crossbeat but not Boat, and the number of people who use headphones of Sony Jabra Boat but not Crossbeat is 35. Sony Jabra Crossbeat but not Boat. तो बट नॉट बोट अगर बोला हुआ है, बट नॉट बोट मतलब बोट के अलावा, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू, दे आर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू प्लस सेकेंड टाइम में बट नॉट में क्या बोला हुआ है, बट नॉट क्रॉस बीट। बट नॉट क्रॉस बीट मतलब क्रॉस बीट के अलावा, दैट इज जेड। तो डब्ल्यू प्लस जेड इज गिवन एज 35। अगर मेरा W प्लस जेड 35 है, उससे मैं अपना T निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि W प्लस जेड प्लस O में से मेरा सिर्फ T अननोन है। सो W प्लस जेड इज 35, O इज 25, 25 प्लस 35 इज 60। तो अगर 60 आ गया तो मेरे T की वैल्यू आ गई 15। जैसे ही मेरा T 15 आया तो R मेरा आ जाएगा 10। तो R की वैल्यू आ गई 10। 10 प्लस 15 इज 25। यस, सही है। अब जैसे ही मेरा आर आया, मेरा आर आने के बाद मेरे को ओ पता है, आर पता है, आर इज 10, दिस इज 25। तो मेरा एक्स प्लस वाई अकेला बचेगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? अगर ये 25 है और ये 10 है, इसमें से 35 गया, 35 गया, तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। सिमिलरली x प्लस वाई अगर 40 रख दे तो w प्लस जेड अपना 35 हो जाएगा। तो वो यहां से भी आ सकता था। ठीक है, देखते हैं पूछा क्या है। अपन ने उतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु यूज हेडफोन्स ऑफ क्रॉसबीट ओनली एंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज हेडफोन्स ऑफ बोट ओनली? हु यूज हेडफोन्स ऑफ क्रॉसबीट ओनली? क्रॉसबीट ओनली इज a एंड बोट ओनली इज d। मुझे अगर a प्लस d चाहिए तो मुझे ये बीच वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो दिस इज गिवन एज 175, दिस इज गिवन एज 165। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला रीजन ओवरलैप हो जाएगा जबरदस्ती। सॉरी, इन दोनों में ओवरलैप ये वाला रीजन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो मैं निकालूंगा यहां पे, what I will calculate, Sony union Jabra will be equal to Sony plus Jabra minus Sony intersection Jabra। Sony की वैल्यू कितनी है? सोनी की वैल्यू है 165, सॉरी 175, और दूसरे वाले की 165। 175 प्लस 165 माइनस सोनी इंटरसेक्शन जबरा।
सोनी इंटरसेक्शन जबरा मतलब सोनी एंड जबरा इज डब्ल्यू प्लस टी प्लस ओ प्लस जेड। 75 है वो, -75। तो 100 प्लस 165 विल बी 265। तो ये हो गया। तो अगर मैं इस पूरे वेन डायग्राम को लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज सोनी यूनियन जबरा प्लस ए प्लस डी प्लस आर, यही लिख सकता हूं। क्योंकि ये सोनी, ये जबरा, अब बचा कौन सा रीजन, ये आर, ये डी और ये ए। आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, आर कितना है मेरा, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 265। ए प्लस डी मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी 10 निकाल चुका हूं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 280, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 280। ए प्लस डी कम्स आउट टू बी 5। गॉट इट? क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी, जरा सी भी? चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। सो द आंसर इज 5। आंसर इज ए, आगरा। एनी प्रॉब्लम, एनी वन, एनी इश्यूज? गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो विद दिस हमने एक बार अपने बेसिक्स ब्रश अप कर लिए। नाउ फॉर टुमारो बी रेडी विथ बाई डायगोनल रिलेशनशिप इन दी थ्री वाला सेट, है ना, and the maxima and minima. So these 3 days you will be learning maxima, minima, cross relationship between different variables, and all the tools which will definitely help you ace the maxima, minima, or I should say LR based DI. So with this, I would like to take your leave. But before going, I would like to say कि भाई, there are all free resources available on Supergrads का platform. You can find the link in the description. And if you're not able to get it in the description, then definitely you can go ahead and search for free resources by Supergrads on YouTube channel, and you will get a live where the link is there in the description as well as in the first comment. Next is those who want to polish their preparation, कि भाई लास्ट शेप देना है, लास्ट बार एक बार ब्रश अप करना है, तो definitely they can avail these focus hour workshops which will not be like कि भाई सिर्फ आपका एक लेवल से शुरू करेंगे। नो, we will be starting from the basics, then building on with the practice, and then going to the next level by solving CAT PYQs. So definitely go ahead with this focus hour workshop. If you wish to invest your one-time pizza cost in learning, then definitely this is a package which you can avail. Next is, yes, if you think you are late for the crash course, or late for the CAT course, then definitely Supergrads is here with the fast track batches. जहाँ पे you will get 10 classes, 10 to 12 classes per week, along with the revision of the classes, and definitely your interview preparation, your test series, and everything will be covered in this package. So how we are planning to cover it by increasing the number of classes per week. So you can avail all these things at this point of time. And if you wish to connect with us, then definitely you can reach out to the team of Supergrads on Telegram, Instagram, YouTube, or you can call us on 6363286363. It's a easy number, 6363. 63 is also 7 का multiple, तो सारे 2 digit 7 के multiple है। 7 into 9 and 7 into 4, कई तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, with this I would like to take your leave. Goodbye, take care.